Hello and welcome to Revolutionizing UPSC. Today we are going to start a new series, a series on newspaper analysis on a weekly basis. So we are beginning with the 30th of September to 6th of October week, and as you can see, the weightage of current affairs is quite much. Around 17 to 20 questions have been asked in the prelims exam on a regular basis. You can see the annual chart over there. साथ ही आप लोग हमारे कुछ पुराने वीडियोस भी हैं related to prelims and mains and how to approach the PYQs, so on and so forth. So you can also have a go through those videos. ठीक है? So without wasting much time, let's get on to today's topics. हमने बस relevant and important topics which we feel are useful for both prelims and mains perspective वो सब हमने cover किया है. There are total 18 such topics. So to begin with, we start with dark matter in neutrino fog. So this was published in one of the science articles of The Hindu. Not just nothing, dark matter quests close in on dire neutrino fog. So यहाँ पे आपको क्या जानना है? आपको यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान में रखना है. What is dark matter and what is neutrino fog? उसके अलावा कुछ नहीं. Once you are well aware of what dark matter is, तो you're good to go for prelims. So अगर आप एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे यूनिवर्स का, तो आप इस पाई चार्ट के जरिए देख सकते हैं कि विजिबल मैटर कंस्टिट्यूट्स ओनली 5% ऑफ द एंटायर यूनिवर्स. 95% of it is comprising of dark energy and dark matter. So this gives you an idea of what dark matter is. कुछ और पॉइंट्स आपको जानने हैं कि इसमें चार्ज होते कि नहीं, मास होते कि नहीं. सो एज फार एज डार्क मैटर इज कंसिडर्ड concerned, there is no charge. It also doesn't emit any light. That means it doesn't interact with photons. साथ ही it possesses mass but which is very much minimal, so it can interact via gravity. और डार्क मैटर को डिटेक्ट करने के लिए ही देयर आर वेरियस एक्सपेरिमेंट स्टेशंस जो कि वर्ल्ड वाइड एस्टेब्लिश्ड हैं. कुछ एक्सपेरिमेंट स्टेशंस आपको जानने भी चाहिए, एंड दीज 3 एक्सपेरिमेंट स्टेशंस वर देयर इन द हिंदू न्यूज़पेपर एज वेल, जैसे कि लक्स जेपलिन यूएसए का, पांडा चाइना एंड जेनन एंटी बिलोंगिंग टू इटली. सो न्यूज़ वाज सच कि इन दिस डार्क मैटर डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट्स न्यूट्रिनोज वर क्रिएटिंग नॉइज in a way कि neutrino is complicating the detection of dark matter, which is making the detection of dark matter difficult. This noise that has been created by neutrino, which is interacting with the dark matter experiment stations, has been termed as neutrino fog. So कल को अगर terminology related question आए कि what is neutrino fog, you should be well prepared, है ना. साथ ही you should know कि what is neutrino. It has been asked once or twice in the previous years. So it is nothing but it is a substance, it is a subatomic particle, and it is the second most abundant particle after photon. So photon is the most abundant, and उसके बाद we have neutrino. So what are the sources? मतलब neutrinos produce कैसे होते हैं? It is through radioactive decay, it is through supernova जहाँ पे जो stars का last phase होता है, then cosmic ray अगर strike करता है atoms को, तो उनके ज़रिए हम लोग को न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होते हैं. Does neutrino have charge? No, neutrinos do not have any charge, but there is a small mass. ठीक है? This much content should be enough for you to attempt any question in prelims and mains with respect to dark matter in neutrino. Over to the next topic. So और एक आर्टिकल एडिटोरियल rather आया था regarding common practice standards. So what is CPS basically? So CPS is nothing but it is related to carbon credits. There are various carbon credits benchmarking companies around the world जो carbon credits provide करते हैं. So what happens is, if a particular practice is considered a common practice, then it does not qualify for getting carbon credits. So बस आपको इतना जानना है कि it is related to environment and ecology, and CPS is something which is related to carbon credits. and आपको ये जानना है कि there is a criteria कि if common practice standards है कोई एक particular practice, then it would not qualify for carbon credits. उसी आर्टिकल, उसी एडिटोरियल में there were some other useful data which could be cited in answers in your mains,
फर्स्टली उन लोगों ने ये कहा कि एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर it contributes 19% of India's carbon stocks, while it occupies only 8.6% of India's total land area, which shows that it is very much important and crucial for our biodiversity. This very sector also contributes an additional carbon sink of 2.5 billion tons of carbon dioxide by 2030. So this makes it very clear that agroforestry will help us in achieving our Panchamrit goals, which were committed by Narendra Modi in Glasgow COP 2021. Over to the next topic. So जैसे कि आप जानते हैं कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का 10 साल हो चुका है. So उसी के रिलेटेड एक आर्टिकल आया था. PIB has also released a list of achievements of this very scheme. So before moving forward to the achievements, I'd like to highlight some of the sectors under Make in India initiative. So prelims में this could be a very good question. So as you can see, not just manufacturing sectors but service sectors have also been covered under Make in India initiative. You can see here legal services, financial services, educational services भी है, environmental services भी है. So do not get confused कि Make in India is only for manufacturing sector. नहीं, Make in India is for manufacturing as well as services sectors as well. ठीक है, so this is to be remembered. Now moving forward to the achievements of Make in India. So this could very well be a question in your mains exam. तो अगर हम लोग को एक दो पॉइंट जो हम लोग लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वी कैन स्टार्ट ऑफ विद वैक्सीन सेल्फ सफिशिएंसी, है ना. कोविड-19 का आप एग्जांपल दे सकते हैं. वैक्सीन मैट्रिक के जरिए हम लोगों ने बहुत सारे वैक्सीन एक्सपोर्ट किए. एज ऑफ नाउ इंडिया सप्लाई 60% ऑफ वर्ल्ड्स वैक्सीन. ठीक है, सो मेक इन इंडिया का ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स है. आप रेलवेज में बात कर सकते हैं कि अबाउट वंदे भारत ट्रेन्स, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स. यू कैन टॉक अबाउट डिफेंस. Yes, our first aircraft carrier, indigenous aircraft carrier to be precise, INS Vikrant. You can write about Project 75I, which deals with indigenous submarines with AIP technology. Now, what is AIP? It's air independent propulsion. You can go through it. Also in electronics, India has achieved heights. Today, India is the second largest mobile manufacturer in the world, mobile phones, and production of electronic goods has increased from, as you can see, from $48 billion to $101 billion in the last 6 years, from 2017 to 2023. So we are witnessing rapid growth in electronics as well under Make in India initiative. Indian merchandise exports has also crossed the $400 billion mark. 2021-22 से ही ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है. एंड recent data भी आप साइट कर सकते हैं कि in the financial year 2023-24, Indian merchandise exports clicked $437 billion. Some of the major export products from India which were highlighted in PIB as well. You can cite the examples of Indian bicycles which are exported to United Kingdom, Germany and Netherlands. Bihar boots which have been supplied to Russian army. Kashmir willow bats. Amul products which have been launched in USA. And obviously toys. Apart from China, there is India, which produces lots of toys, and 400 million toys are produced annually in India. Make in India has also been able to generate employment. For example, you can highlight the textile sector, which has created 14.4 crore jobs in India. There are some issues, not just with Make in India, but with the manufacturing sector as a whole. As you can see, the GDP share of manufacturing, which was 15 to 17% back in 90s and 2000s, it still continues to be the same. Right? GDP share of manufacturing still ranges between 15 to 17%, and the employment generated by manufacturing sector is again, it has dropped down from 12% to 11%, and mostly you can see employment is in informal sector. So these are some of the issues, but the objective of this editorial was to make you aware about the various achievements which could be definitely asked in your mains. Over to the next slide. We have places in news. Now, as you can see, Israel has been fighting war on 3 fronts. On one hand, it is fighting with Iran directly. It is fighting the Hezbollah in Lebanon, and obviously the Hamas in the Gaza Strip. So वहीं से related आपको कुछ places in news जानने की ज़रूरी है.
फॉर इंस्टेंस माउंट एल रास, आइता अल शाब, बिंत जबेल, बेका वैली है। आप सब देख सकते हैं, मैप में भी आप देख सकते हैं बिन जबेल कुछ यहीं पे इजराइल के साथ जो बॉर्डरिंग एरिया है लेबनान का, वहीं पे एक डिस्ट्रिक्ट है बिन जबेल करके। एंड यू कैन ऑल्सो सी बेका वैली विच वॉज ऑल्सो इन न्यूज़ ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, बेका वैली भी लेबनान का ही पार्ट है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी मूव ओवर टू गाजा स्ट्रिप विच वॉज ऑल्सो इन न्यूज़। एंड कुछ कुछ कैंप्स है यहाँ पे, जैसे कि नुसैरत कैंप यू कैन सी, देन बेत लहिया, ये दोनों ही प्लेसेस गाजा स्ट्रिप को बिलोंग करते हैं। Then Sudan civil war has also been in the news ever since 2023. It has almost been a year where the SAF and the RSF are fighting with each other, and this map has been taken from the Hindu only. तो यहाँ पे भी कुछ आप देख सकते हैं कि नियाला, अल फशीर, तो इसमें एक्सप्लेन करने की कुछ बात नहीं है, बट यू शुड नो कि अगर एग्जाम में पूछे कि खरतूम या वर्ड मदानी को मैच द फॉलोइंग के टाइप पूछ सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको PYQs में कैसे आया है ना, लोकेशंस इन न्यूज़। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये सब सूडान का है। तो दरफूर, खरतूम, वर्ड मदानी, अल फशीर, एल ओबेद, दे ऑल बिलोंग टू सूडान। नेक्स्ट न्यूज़ था AFSPA का। सो AFSPA रिलेटेड कुछ एक्सटेंशंस था कि AFSPA को एक्सटेंड किया गया कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, एंड योर ड्यूटी इज टू नो अबाउट AFSPA। ठीक है, it could be a question in prelims anytime. So what happens is this particular act, Armed Forces Special Powers Act, it gives unbridled power to Army and the CAPF deployed in disturbed areas. ठीक है, or power to kill anyone, to search without warrant. ठीक है, so if the subject is violating the law, no prosecution or suit without central government का sanction. This you should know. Now, who can declare an area as a disturbed area under AFSPA? Not just the union, but the state as well. This is something you need to know. Okay? Both the union government and the state government, they have concurrent powers with regards to declaring disturbed area under AFSPA. अभी AFSPA कहाँ पे लागू है? Currently, AFSPA is applicable in a few districts in Assam, Manipur, Nagaland and Arunachal Pradesh. तो four states ये आपको पता होना चाहिए. Mains पे you can use certain committee recommendations regarding AFSPA. Jeevan Reddy committee which was established way back in 2004, संतोष हेगड़े committee, दोनों ही committees ने बताया कि in fact recommend किया है that AFSPA should be repealed and rather appropriate provisions be inserted in the Unlawful Activities Prevention Act. So this could be cited in mains as a conclusion or way forward. नेक्स्ट स्लाइड, इलेक्शन सिंबल एलोकेशन। सो आपको पता है कि एनसीपी के दो फैक्शन हो गए अभी, एक तो शरद पवार फैक्शन और एक अजित पवार फैक्शन, एंड बोथ ऑफ देम आर फाइटिंग विथ रिस्पेक्ट टू हु वुड गेट द एनसीपी सिंबल, द ओरिजिनल एनसीपी सिंबल विच वाज द क्लॉक। सो आवर ड्यूटी इज टू नो व्हाट इज इलेक्शन सिंबल एलोकेशन, हु एलोकेट्स इट रादर। ठीक है, सो हु एलोकेट्स दिस सिंबल्स, इट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड व्हाट इज द लॉ विच इज द गवर्निंग law for symbol allotment? It's the election symbols order. ठीक है, so under election symbols order ECI allocates symbols to political parties. जो भी recognized parties है जैसे कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, उनके लिए exclusive symbols are allocated, and for unrecognized party but registered ones उनके लिए free and non-exclusive symbols. ठीक है, if there is a split in a party, for example अभी जो एनसीपी में हुआ है, फैक्शन हो गए, एक शरद पवार फैक्शन और एक अजित पवार फैक्शन, इन दैट केस द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड्स ऑन डिस्प्यूट रिगार्डिंग सिंबल एलोकेशन. ठीक है, सो दिस मच इज इनफ टू टैकल द क्वेश्चन अगर वो आता है प्रीलिम्स में. रिसेंटली एक इकोनॉमी का भी न्यूज़ था, अंडर विच मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस एक्सटेंशन टू बूस्ट लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैपेसिटी, एज यू कैन सी. सो व्हाट इज MIP? आपको समझना है कि MIP का कॉन्सेप्ट क्या है, कब इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. सो व्हाट इज MIP और मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस? इट इज बेसिकली अ टेम्पररी इकोनॉमिक मेजर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक फैक्ट्रीज फ्रॉम प्रीडेटरी प्राइसिंग ऑफ इम्पोर्ट्स. मान लीजिए चाइना कोई टेक्सटाइल गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है at a very low prices, it is dumped in India. So what will happen is it will make our domestic industry wala goods less competitive. Hence, to protect the domestic industries, minimum import price is a policy initiative that can be implemented by the government, and that has been done recently. So what you need to know, minimum import price
का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम प्रीडेटरी प्राइसिंग ऑफ इम्पोर्ट्स। आप ये चाइनीज़ गुड्स जो कि डंप किया जाता है इंडिया में, उसका एक एग्जांपल दे सकते हो। उसको काउंटर करने के लिए कई सारे और इकोनॉमिक पॉलिसीज भी हैं। फॉर इंस्टेंस काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ हो गया, एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाया जाता है, जो कि पहले लगाया भी गया था, आपने पढ़ा भी होगा। सो मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस इज अनदर सच पॉलिसी इनिशिएटिव। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं कि सिक्स शेड्यूल में। नाउ व्हाई इज इट इन न्यूज़? बिकॉज लद्दाख इज सीकिंग स्पेशल स्टेटस इन द फॉर्म ऑफ सिक्स शेड्यूल। तो आई हैव यहाँ पे मेंशन किया है मैंने कि सिक्स शेड्यूल के बारे में, that governor organizes and reorganizes. You can go through it. It is very much it is taken from Lakshmikant only, ठीक है। and you cannot take it easy. आप bypass नहीं कर सकते इन chapters को, fifth schedule and sixth schedule areas. Every year UPSC is asking questions from these topics. जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे district and regional councils होते हैं which can make laws on matters, but what you need to remember is that assent of governor is required for these laws to get passed. So ये सब कुछ चीज़ें जो आप यू कैन गो थ्रू योर सेल्फ, यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कुछ चीज़ नहीं है। एज ऑफ नाउ जो भी लॉज है या फिर एक्ट्स है पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, दे डू नॉट अप्लाई टू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स और रीजन्स, बट दे कैन अप्लाई विद स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशंस if the authority decides so. Now who is the authority here? It's the president in case of Meghalaya, Tripura and Mizoram, and governor in case of Assam. This is again given in Lakshmikant. You can go through it. ठीक है। सो सिकल सेल डिजीज, दिस इज द 9th टॉपिक, एंड इसी के ऊपर भी और एक आर्टिकल आया था। सो व्हाट वी नीड टू नो इज the in and out of sickle cell disease. What is it? How can it be treated? What are its implications? So on and so forth. So as you can see, sickle cell disease is nothing but a genetic mutation that causes RBC, or red blood corpuscles or red blood cells, to become sickle shaped rather than round. As you can see, जो normal red blood cells होते हैं वो round होते हैं, लेकिन जो sickle cell disease होते हैं वहाँ पे RBCs take the form of sickle shape. इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसका आउटकम क्या होता है? ये आरबीसी कैन नॉट सर्कुलेट इफेक्टिवली थ्रू आउट द बॉडी, हिंड्रेंस पैदा करते हैं, बिकॉज ऑफ विच आरबीसी कैन नॉट सर्कुलेट इफेक्टिवली। इसका आउटकम एनीमिया हो सकता है, ऑर्गन डैमेज, टिश्यू डैमेज एंड रिकरेंट पेन, ठीक है। एंड यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इट इज एन इनहेरिटेड डिजीज डिसऑर्डर। ट्रीटमेंट के लिए आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हो, इट वुड हेल्प रिलीव एनीमिया। जीन थेरेपी है CRISPR-Cas9, इट हैज़ ऑल्सो बीन इन द न्यूज़, या आप स्टेम सेल थेरेपी के थ्रू भी इसको ट्रीट किया जा सकता है। सो इट इज अगेन अ रेयर डिजीज। Recently there has been another thing that's going on in the news, that is the United Kingdom has ceded its long conquered island, that's Chagos Island. तो एक्चुअली Chagos Island को ब्रिटिश ने सीड किया है मॉरिशियस को। आपको यहाँ पे क्या जानना है कि what is the exact location of Chagos Island? As you can see, मालदीव से नीचे मडागास्कर के जस्ट ऊपर है चागोस आइलैंड, एंड विद इन चागोस आइलैंड द लार्जेस्ट आइलैंड इज डिएगो गार्सिया, जहाँ पे यूएस और यूके का एक मिलिट्री बेस है। नाउ एज पर द एग्रीमेंट, इट अलाउज द यूके टू रिटेन सोवरेन राइट्स ओवर डिएगो गार्सिया। एज यू कैन सी, वेयर अ जॉइंट यूएस यूके मिलिट्री बेस विल रिमेन ऑपरेशनल फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 99 ईयर्स। तो मॉरिशियस को जो सीड किया गया है वो चागोस आइलैंड किया गया है, बट डिएगो गार्सिया इज स्टिल विथ यूके, ठीक है। नेक्स्ट इज यूरोपियन यूनियन डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन. So EU proposes extension of deadline, as you can see in the article, to implement deforestation regulation. Now what is it? Now आप देख सकते हो कि European Union has always been vocal about environmentalism. So EU deforestation regulation is another such step. So these are regulations or rules designed to prevent import और export of specific products linked to deforestation. मतलब कोई भी ऐसे goods या कोई भी ऐसे सामान which is linked to deforestation या forest degradation, तो वो सामान का ट्रेडिंग बंद करेंगे यूरोपियन यूनियन. So this is a mandate for European countries, but because of several objections, these deadlines, EUDR deadlines, have been extended. Now आपका क्वेश्चन होगा कि what are the products that are covered? Now products that are covered are wood and timber products. Obviously this is directly related to deforestation, जैसे कि पेपर हो गया, फर्नीचर हो गया, palm oil which is again related to deforestation, meat and leather, coffee, cocoa, rubber. So these are the products that are covered under EU deforestation regulation, and mandate ये है कि these regulations aim to prevent
trade of those products which are linked to deforestation, forest degradation. इतना पता होगा, you're good to go with it. So recently कुछ नए क्लासिकल लैंग्वेजेस ऐड हुए थे. सो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी जानना चाहिए कि what was the first language to be given status of classical language, which was Tamil. So recently आप देख सकते हैं कि असमीज, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत, इन पांच लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा मिला. उसके पहले तमिल, जैसे आप देख सकते हैं, विच वॉज द फर्स्ट, फिर संस्कृत आया, फिर तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, ओडिया. सो एज यू कैन सी, एज ऑफ नाउ 11 लैंग्वेजेस इन इंडिया हैव बीन गिवन क्लासिकल लैंग्वेजेस स्टेटस. ठीक है, इसके कुछ बेनिफिट्स भी विच यू कैन गो थ्रू, कि अवार्ड्स मिलते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी एस्टेब्लिश्ड फॉर दैट क्लासिकल लैंग्वेज, देन देयर विल बी प्रोफेशनल चेयर्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर दैट क्लासिकल लैंग्वेज. तो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स दैट come if a language has been given the status of classical language. Next, there was another editorial that decks have been cleared for Periyar Memorial in Kerala's Alappuzha. So what is our duty? Our duty is to know about Periyar EV Ramaswamy, which could be a question in prelims as well as in mains. So he was the father of Dravidian movement and rebelled against what? Brahmanical dominance and inequality. And he did join Congress. He did join the Indian National Congress in 1990, but 6 साल बाद he resigned. Among his social reform movements, one was that he participated in Vaikom Satyagraha in 1924. तो वो क्या था? Vaikom Satyagraha, it demanded entry of lower caste, the Ezhava caste, जो कि lower caste थे in southern India. तो उनके entry के लिए he fought in Vaikom Satyagraha. He is also known for the self-respect movement. Then there was this Justice Party in southern India, which was formed way before the independence of India, and he was also the head of the Justice Party. Okay? And in 1944, this very Justice Party was given the name of Dravida Munnitra Kazhagam, जो DMK party आपको आज देखने को मिलता है. That is the successor to Justice Party only. ठीक है? So this much information is enough regarding Periyar EV Ramaswamy. Then we move over to fluorescent nano diamonds, which was also in the news. So your duty is to know about FNDs and what are the applications of fluorescent nano diamonds. As you can see ki from PYQs or trend of PYQs that application related questions बहुत पूछते हैं with respect to science and tech. So आपको जानना है कि FNDs क्या है and applications क्या है. तो चलिए पढ़ते हैं. These are nanometer sized diamonds, these fluorescent nano diamonds, which are made from what? Carbon nanoparticles. तो do not get confused, अगर आपको कोई ऐसा statement मिलता है कि FNDs are created from carbon nanoparticles, तो वो सही है. These nano diamonds are stable under lights and are non-toxic, and they also emit visible light. Obviously, it can be inferred from the name itself, fluorescence, right after absorbing radiation that is not normally visible. एप्लीकेशंस क्या क्या है? तो आपको ये जानना है कि जो लेविटेटेड एफएनडीज है, दे आर सेंसिटिव टू एक्सेलरेशन, और अगर कोई मटेरियल सेंसिटिव है टू एक्सेलरेशन या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट कैन बी डेफिनेटली यूज्ड एज सेंसर्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज. गायरोस्कोप की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो. इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इसका एप्लीकेबिलिटी क्या है? इट कैन बी यूज टू ट्रैक सेल्स एंड मॉनिटर देम, मतलब कैंसर डिटेक्शन में भी हेल्प कर सकते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो आइडियल फॉर टेम्परेचर सेंसिंग. ठीक है, so this is it regarding fluorescent nano diamonds. Next topic is Madhya Pradesh cabinet meets in tribal queen's capital on her 500th birth anniversary. So the queen that you're talking about is Rani Durgavati, who belonged to the Chandel dynasty. Sorry, there is a slight mistake, it's not 18th century, it should be 16th century. Okay. So she married the Gond king Dalpat Shah of Garkatanga kingdom. What you should also know is that she was the contemporary to Akbar, and during Akbar's reign only, Asaf Khan under Akbar attacked Durgavati's kingdom in 1564. So इस political history का जो statement है, this is not much important, but you should remember कि she was a contemporary to Akbar, she belonged to Chandel dynasty, and she married the tribal king, that is the Gond king Dalpat Shah. ठीक है, रानी दुर्गावती. तो या दिस मच शुड बी एनफ.
Over to the next slide, we have again something from the recent conflicts that is happening in West Asia. सो आपको मिसाइल्स देख सकते हैं कि मिसाइल्स भी बहुत न्यूज़ में था. सो इसराइल के जो मिसाइल सिस्टम है विच हैज़ बीन यूजफुल इन इंटरसेप्टिंग द मिसाइल अटैक्स ऑफ ईरान, हेजबोल्ला, सोन एंड सो फोर्थ, वो आपको जानना चाहिए कि देयर इज़ द आयरन डोम मिसाइल सिस्टम विच इज़ अ डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक्चुअली, डेविड स्लिंग एंड एरो. ये तीनों ही मिसाइल सिस्टम किसका है? इसराइल का है. देन देयर इज स्टॉर्म शैडो एंड ATMCS. ये स्टॉर्म शैडो जो है वो ब्रिटेन का है, यूक्रेन को रिसेंटली दिया गया था ड्यूरिंग इट्स वॉर विथ रशिया, एंड ATMCS बिलोंग्स टू USA. ठीक है. देन वी हैव स्वच्छ भारत मिशन विच हैज ऑल्सो कंप्लीटेड 10 years. ठीक है, 2014 में जो लॉन्च किया गया था. ना स्वच्छ भारत का दो एंगल है. देयर इज वन स्वच्छ भारत मिशन अर्बन which comes under Ministry of Housing and Urban Affairs, and one is Swachh Bharat Mission Rural which comes under Ministry of Jal Shakti. ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. एंड जो रिसेंट आर्टिकल आया था इट हाईलाइटेड द प्रोग्रेस दैट स्वच्छ भारत मिशन अर्बन हैज़ विटनेस्ड. एज यू कैन सी स्वच्छ भारत मिशन का कई सारे एम है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का, to make the cities garbage free by 2026, maintaining open defecation free status across 4,372 ULBs, urban local bodies, 100% source segregation and door-to-door collection of waste, safe disposal in scientific landfills. तो इसी के related कुछ progress दिया गया था कि 481 dump sites have been remediated out of 2,400. ठीक है, मीन्स ऑलमोस्ट 1/6 हैव बीन रिमेडिएटेड. तो इसी के रिगार्डिंग कई सारे डाटा हैं. व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू विजिट दिस वेबसाइट SBM अर्बन, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन .org, और वहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा. ठीक है, वहाँ पे वैल्यूएबल डाटा है कि कितने डंप साइट्स रिमेडिएट हुए, कितने सारे सीवरेज बनाए गए. ठीक है, तो वो सब डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस वेबसाइट पे. What you need to do is you need to keep tracking and updating your answers with this important data which you can find in the SBM dashboard. तो आप इन डाटा को मेंस में भी साइट कर सकते हो. The last topic is India-Sri Lanka relations. So recently Jaishankar met President Disanayake of Sri Lanka, who has been recently elected to the post of president, and Jaishankar has reaffirmed India's full support in Sri Lanka's economic recovery and reforms. So what you need to do is, what I'll teach you today is how to approach a mains answer, how to approach a mains question with respect to, अगर IR related कोई mains question है तो उसको approach कैसे करेंगे आप, उससे related थोड़ा एक idea दूंगा मैं आपको. ठीक है. So as you know, there are three components: introduction, body and conclusion. You can start off the introduction with any current event. ठीक है, या फिर you can also start off with any historical context. For instance, India-Sri Lanka relations are 2,500 years old and it has been there since Mauryan Empire या Ashokan times. ठीक है, बॉडी में आप areas of cooperation लिख सकते हो. ठीक है, you can write about economic cooperation. For instance, bilateral trade जो है $5 billion है, investments कितनी हो रही इंडिया से. ठीक है, for instance, you can see FDI from India has exceeded $2 billion to Sri Lanka. Then there are currency swap agreements. ठीक है, recently only 2022 में RBI has struck agreement to grant $400 million, and as you know, this was signed amidst the 2022 Sri Lankan economic crisis. Both of these countries have also signed SAFTA. What is SAFTA? It is South Asian Free Trade Agreement. So these are the areas of cooperation in economic angle. Then in geopolitical aspect, we have regular high-level visits. Then both of these countries, India and Sri Lanka, are mutual members of SAARC, BIMSTEC, IORA, that is Indian Ocean Rim Association. Then geostrategically, Sri Lanka is situated on sea lanes of communication where 90% of India's trade happens. So Sri Lanka is again geostrategically very important for India. You can write about defense, about military exercises like Mitra Shakti and SLINEX. ठीक है. Then there is also a trilateral maritime security cooperation agreement between India, Sri Lanka and Maldives. Then development related cooperation भी है, जैसे कि 2022 में India provided a line of credit during economic crisis 2022 to Sri Lanka. India extended LOC credit worth $4 billion. Then community development में भी focus है इंडिया का.
There is assistance for internally displaced Tamils. 30,000 houses and other medical facilities by India have been provided till now. ठीक है, जाफना रीजन में जो भी तमिल माइनॉरिटी है श्रीलंका में. Then you should also highlight issues. आप इसको फ्लो चार्ट में भी दिखा सकते हो कि the Tamil issue is the first one, कि the 13th Constitutional Amendment Act is yet to be implemented. This was signed during the era of Rajiv Gandhi. Then Chinese influence in Sri Lanka वो भी बढ़ता जा रहा है. You can cite the example of Hambantota port which has been leased to China for 99 years. Then there is the fishermen issue crossing maritime borders. Then trade balance, क्योंकि trade balance is in favor of India, so कई बार श्रीलंका से ऑब्जेक्शन आता है इसके लिए. Then there is also smuggling via marine routes. So these are some of the issues which you can highlight through a flow chart as well. To conclude, you can end with a way forward that a SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, could be signed. You can aid the fishermen community. ठीक है, you can provide them with other forms of livelihood. Also, it is very important to expedite the ongoing projects, to build mutual trust. For example, economic development in Trincomalee port, renewable energy projects in 3 islands of Jaffna. So India को इन सब का contracts मिला है, and it will be beneficial for India if India can expedite the implementation of these projects. Then both of them can also collaborate on security issues and intelligence sharing, maritime domain awareness. These keywords could be written. So this is the way you can approach this question if ever it comes. And Sri Lanka has been asked in the past. 2022 का जो मेंस था उसमें भी पूछा गया था. So that is it from my side. This was the first series of our weekly newspaper analysis. आगे भी हम लोग करते रहेंगे. And if you find it informative enough, then do like and subscribe the video. Thank you.